Now children, you are going to understand subset. If all the elements of the set A belongs to the set B, the set A is said to be the subset of the set B. Need to understand like this. Suppose if I will take set A, what is subset? You understand children first of all. If I will take A, set A equal to 5, 6, 7. Okay. And set B equal to 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So all the elements of the set A belongs to the set B. Then we can say that A is the subset of the set B. Once again, set A 5, 6, 7 should belongs to the set B. You can see it is belongs or not belongs. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So definitely 5, 6, 7 is present in set B. So this is called set A is, this is called A belongs to set B. So A is the set A, it's said to be the subset of the set B. Okay. So we can write like that. A is the subset of set B. This is the subset symbol children. Subset. Okay. So we can write A is the subset of B because A elements belongs in B. All the elements belongs in set B. That is why. Okay. So notation is like that. A is the subset of B. You can read. If suppose I will take another example. Set A is a student set A X such that X is a student of your school, and set B I am taking X such that X is a student of class 8 of your school. Get it? So what you will say? X subset of X is a student of your school, and set B is X such that X is a student of class 8 of your school. Means B is the subset of A, because subset of A is saying that student of your school, and student of your school belongs to class 8 is belongs to your school. Okay, so B is the subset of A. So we can write B is the subset of A. Clear children? So we read as a B is the subset of A. Clear? More examples you can take. Suppose set B 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 like that, and set Q equal to 4, 8, 12, 16. So P is the subset of Q. Okay. So points to remember children. N, suppose N, you know, symbol of N means natural number. N is the subset of whole number. Clear? Since every natural number is also a whole number. You know, natural number start from 1, 2, 3, 4 like that, and whole number starts 0, 1, 2, 3, 4 like that. So N is subset of W because N element present in the whole number. That is why. Okay. And N is the also a subset of Z. Z is means integer. Natural number also a subset of integers. Okay. And whole number is also a subset of integers. Clear children? So every set is a subset of itself. This point is very important. Every set is the subset of itself. Like A is the subset of A. B is the subset of B. Okay. So like that. Every set is a subset of itself. Second point, empty set. Empty set, you know, this is denoted as a phi. Empty set phi means nothing. Is a subset of every set. Phi जो है वो सभी सेट का सबसेट है. ठीक है. Phi सभी में exist करता है. Phi is the subset of A. Phi is the subset of B. Phi is the subset of P. We cannot ignore phi. Phi is the empty set and is a subset of every set. Okay.
If A is the subset of B, B is the subset of A, that means if A is the subset of B and B is the subset of A, then we can say A equal to B. Clear children? Yesterday I taught, means previous video I have taught that A equal to B means when A equal to B, when it will be equal set, and two sets are equal if both the sets have the same identical element. So in this subset also, if A is the subset of B, B is the subset of A, then A equal to B. Clear? Now next is proper subset. I hope this is clear to you. I read once again this topic. The set A is said to be proper subset of set B. Proper subset means all elements of set A are contained in set B. जितने एलिमेंट सेट ए में है वो सेट बी में भी होने चाहिए. एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए. और एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ओके, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट इन ए. ओके, देन वी कैन से दैट proper subset. A is the proper subset of B. Read is A is the proper subset of B. Just see one example. Okay. Suppose A is, I am taking 5, 6, 7. Okay. And B taking 3, 5, 6, 7, 8. So you can see 5, 6, 7 is present in set B also, 5, 6, 7. Okay, set B also 5, 6, 7 present, but 3 and 8 is not present in set A. So we can say this, all this criteria fulfill, means all elements of set A are contained in set B, and at least one element, here is two elements which is not present in A, but at least one element, if it is not in set B, then we can say that A is proper subset of B. This is the symbol of proper subset. Okay children, this is the symbol of proper subset. I hope it is clear. Once again देखो, अगर सेट A का एलिमेंट, सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए सेट B में, क्लियर, बट एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो नहीं होने चाहिए. यहाँ पे दो एलिमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट एक एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि प्रॉपर सबसेट, दिस इज द प्रॉपर सबसेट. क्लियर? सो n इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ W because n is the natural number and W is the whole number, and whole number you know start from 0, 1, 2 ... infinite it will go, and natural number start from 1, 2, 3, 4. So one element which is not present in whole number, that is 0. So we can say n is a proper subset of W. Clear children? Now next is number of subset and proper subset of given set. I will give you one formula. नंबर जब निकालना हो सबसेट्स का और प्रॉपर सबसेट का, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ 2 to the power n, number of subset, this is the formula children, and number of proper subsets of it equal to 2 to the power n minus 1. ठीक है? If I will take number of elements 0, 0 means 5, nothing, कुछ नहीं है, मतलब वो 0 है. ठीक है? If number of element is 1, if I will put here 2 to the power 1, the value is what? 2 to the power 1 means value is 2 only. If I will put 2 to the power 0, then value is 1. So number of subset कितने हो गए? 1 हो गए. अगर proper subset में put करते हैं, proper subset formula is 2 to the power n minus 1. So in this if you will put 2 to the power 0 minus 1, n की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? You will get 0. Okay, 2 to the power 0 means 1. 1 minus 1 is 0. So for that, this means it is 5, empty set. So proper subset is nil. Proper subset क्या है यहाँ? कुछ नहीं, nil है. So like that we, if suppose
I will show you this table. It is very clearly given in your book, children. You can understand by this table easily. Now see here, number of subset here, 2 to the power 1, 2. 2 to the power 2, if I will 2 value put, then you will get 4. तो 4 को कैसे लिखेंगे? You will write in subset. Subset को लिखेंगे 5. Already I told you that empty set, this is 5. 5 is a subset of all. सबसेट ये सभी का है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. वो सारे सेट का सबसेट होता है 5, इसलिए 5 को इग्नोर नहीं करोगे. यू हैव टू टेक 5 ऑल्सो. तो 5, देन हाउ मेनी नंबर्स? 3 नंबर है यहाँ पे ना. तो 3 नंबर को हम ए और बी को कैसे लिख सकते हैं? पहले तो हम 5 लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे सेपरेटली, फिर बी को लिखेंगे सेपरेटली, एंड देन फिर बोथ वी विल टेक ए बी. क्लियर चिल्ड्रेन? अगर यहाँ पे 3 है इसलिए हमने 1, 2, 3 लिया सबसेट में. अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है. यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे 3 थे, ठीक है. 4 थे, 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पे जैसे आएंगे 8 एलिमेंट. तो 8 को कैसे लिखोगे? पहले तो 5 लिखेंगे, फिर ए को ए बी सी अगर यहाँ पे है तो ए सेपरेटली, बी सेपरेटली, सी सेपरेटली. उसके बाद अगेन ए बी लेंगे, फिर ए सी लेंगे, फिर बी सी लेंगे, फिर एट लास्ट ए बी सी तीनों को लेंगे. ये सबसेट के रूल है, ठीक है चिल्ड्रन. नाउ प्रॉपर सबसेट में क्या करेंगे? ऑलरेडी आई एक्सप्लेन. नील होगा जहां पे 0 होगा, एम्प्टी सेट. ओके, अगर यहाँ पे 2 आता है प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 3. तो 3 को कैसे डिनोट करेंगे? 5 इज इंक्लूडेड. 5 ए सेपरेटली, बी सेपरेटली, पर ए बी नहीं लिखेंगे चिल्ड्रन. वी विल नॉट राइट ए बी in proper subset. Clear? You know the definition of proper subset. Now अगर यहाँ पे 7 आ रहे हैं, proper subset number of proper subset is 7. तो हम A, B, C को कैसे लिखेंगे? 5 included, 5 तो रहेगा ही. Then A separate, B separate, C separate, then AB, then BC, AB, AC, and then at last BC. Proper subset में हम A, B, C नहीं लेंगे. समझ आ गया? Proper subset, you know, when we will say proper, if all the elements of set A are contained in set B and there exists at least one element in set B which is not in A. Clear children? अब आते हैं now superset. Superset क्या है? जैसे कि A is the subset of B. अगर A जो तुम्हारा है वो सबसेट है B का, तो मतलब ये A के पास सारे एलिमेंट्स हैं. ए जो है बी के पास सारे एलिमेंट है, तो बी क्या हो गया? बी कहलाएगा, बी इज कॉल्ड एज बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी के पास सारे एलिमेंट है. 5, 6, 7 जो ए के पास है वो बी के पास सारे हैं, तो बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए. क्लियर चिल्ड्रन? सो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए. वी राइट बी इज द सुपर सेट, और बी सुपर सेट का ये सिंबल होता है. बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए. ओके चिल्ड्रेन? क्योंकि बी के पास सारे एलिमेंट हैं जो ए के पास है, इसीलिए वी कैन से दैट बी इज द सुपर सेट ऑफ ए. क्लियर ऑल ऑफ यू? अप टू हियर दिस इज एनफ. रिवाइज करिए इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे. ओके.